सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ अस्माकम् अद्यतनविषयः अस्ति षड्विंशतिः इति अभ्यासः 26. Yesterday we were seeing some new things in Abhyasa 26. First, there is only one dhatu, Rud dhatu. We had seen the difference in, for example, when we talk about karta, karta, kartarau, kartaraha, but pita, pitarau, pitaraha, not pitaraha. Anyone remembers the sutra? That is the reason why it is not pitaraha. What is this sutra? Aptrintrich swas 6-4-11. 6-4-11 Satyam. Aptrintrich swasre natre neshtre kshatri. Aptrintrich swasre natre neshtre swastre kshatri hotra potra prashasrinam 6-4-11. So in those shabdas it will become dirgha, jaise kartaraha and vaktaraha. Here they have said drishtu dhatu, that's same, drashtaraha, tvashtru, tvashtaraha, all that will come because of that sutra. Then we also saw another new thing, of course Sudadigana. Sudadigana dhatu vikarana pratyaya shaha, that will become a, but Bhadigana is also a. So what was the difference? Anyone remembers? Yes, the guna over here. In Bhadigana guna bhavati. That is, bhu will become bhavati, ni will become nayati. But here, likhati will not become lekhati because likhati is tudadigana dhatu. So there is no guna. Likhati, likata, likanti. In this sense, tudati, tudaha, tudanti. In that, it will not become todati. We had seen this also yesterday. Like lekhati, it won't become lekhati, it won't become todati or melati or kshepati or dishati. All this won't happen, just as it is. Then another new thing we saw was karma vachya or bhava vachya. So kartru vachya, everything has been, all the abhyasas have used kartru vachya, but karma and bhava came up. We have been seeing that niyama 110. We have seen ka in that niyama till akarma. So in karma vachya, this will all come. So the next point from here that we will see today is the difference between kartre, karma and bhava. But we had seen another new thing yesterday, sakarmaka and akarmaka dhatu. So dhatus are all either sakarmaka, akarmaka. Sakarmaka dhatu they had given. In sakarmaka dhatu, akarmaka की साधारणतया पहचान ये है कि जिसमें किम इत्यादि प्रश्न नहीं उठता. तो किम किसको, मतलब the example was given swapiti. Swapiti example if we take, kim swapiti, what is he sleeping, इसका कुछ मतलब है नहीं. It doesn't mean किसको सो रहा है. There is no meaning in that. So in such dhatus where किसको क्या ये सब, it doesn't mean anything, then those are akarmaka. Like chalana, hasa, all those dhatus are akarmaka. Sakarmaka dhatu, gam, gachati is sakarmaka in that sense. Patati and all that will be sakarmaka. Astu. Prathama. केतुल जी कृपया पठतु कर्तृवाच्य में वो
नियम कर्तृवाच्य में एक निमिष सुमन जी केतुल जी कृपया पढ़ें। हाँ हाँ संस्कृत में 3 वाच्य होते हैं। हाँ एक कर्तृवाच्य, नहीं, उसके पीछे 5वें भाग से ओके 5वें पंक्ति। हाँ ठीक है। कर्तृवाच्य में कर्ता मुख्य होता है। हाँ क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। हाँ कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया। सत्यम। सो कर्तृवाची ऐसे है, कर्ता मुख्य है तो क्रिया कर्ता के साथ अनुसार चलेगी और कर्ता में प्रथमा। सो कर्ता विल ऑलवेज बी इन प्रथमा विभक्ति। जैसे रामः ग्रामं गच्छति, यहाँ पे कर्ता इज राम, सो प्रथमा विभक्ति एक वचनम रामः। ग्रामम द्वितीया विभक्ति, ग्रामम गच्छति, गच्छति क्रिया। सो गच्छति इज इन अकॉर्डेंस विथ रामः, प्रथमा एकवचनम, प्रथमा पुरुषे एकवचनम गच्छति इन दैट सेंस। बट द्वितीय सुमंजय जी कृपया पठतु, कर्मवाच्य में कैसे है? asking me? यस हाँ जी। Okay, but I whether it's Sumanjay or Sundarji. So अच्छा सुमंजय जी, सॉरी। यू कैन हियर मी वेल राइट? शुड आई चेंज वाईफाई और समथिंग? no, it's fine. But sometimes I confuse between my and Sundarji's name. ओके So कर्मवाच्य में हाँ कर्म मुख्य होता है। कर्म के अनुसार ही क्रिया का पुरुष, वचन और लिंग होगा। कर्ता के अनुसार कुछ नहीं। कर्मवाच्य की पहचान है कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, क्रिया कर्म के अनुसार। दिस ऑल्सो वी सॉ यस्टरडे विद एग्जांपल्स। कर्तृवाच्य में कर्ता मुख्य है परंतु कर्मवाच्य में कर्म मुख्य है। दिस इज द डिफरेंस। एंड कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार चलेगी, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार ही क्रिया कर्म के अनुसार चलेगी। कर्ता के अनुसार इन कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य कर्म के अनुसार। सो कर्म के अनुसार ही क्रिया का पुरुष, वचन और लिंग होगा, कर्ता के अनुसार कुछ नहीं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कर्तृ एंड कर्म। द अदर डिफरेंस इज कर्मवाच्य की पहचान ये है कि कर्ता में तृतीया इंस्टेड ऑफ कर्ता में प्रथमा। हियर इट इज कर्ता में प्रथमा, हियर इट इज कर्ता में तृतीया। कर्म में द्वितीया हियर इन कर्तृवाच्य, बट इन कर्मवाच्य कर्म में प्रथमा। एंड क्रिया कर्म के अनुसार, नॉट कर्ता के अनुसार। सो फॉर एग्जाम्पल रामः ग्रामं गच्छति, इन द सेम सेंटेंस इफ यू वांट टू से इन कर्मवाच्य, सुमंजय जी भवानेव कृपया वदतु, कर्मवाच्ये किं भवति? रामः ग्रामं गच्छति। रामेण ग्रामं गम्यते। सत्यं। ग्रामेण प्रथम तृतीया एकवचनं रामेण, एंड ग्रामं प्रथमा एकवचन। अपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीया सेम। सो ग्रामं, रामः ग्रामं गच्छति इन कर्तृवाच्य, एंड कर्मवाच्य रामेण ग्रामं गम्यते। दिस द पद विल चेंज इन द एंड फॉर क्रियापद। अस्तु, तृतीय भाववाच्य। सुंदर जी कृपया पठतु भाववाच्य। भाववाच्य में कर्ता में द्वितीय, कर्म होगा ही नहीं। क्रिया में प्रथम पुरुष का एक वचन। हाँ, भाववाच्य में कर्ता में तृतीय, कर्म होगा नहीं, क्रिया में प्रथम पुरुष। सो इट विल बी समथिंग लाइक रामः स्वपिति। They won't say where is he sleeping, how is he sleeping, nothing. रामः स्वपिति, he is sleeping, बस। सः रोदिति, he is crying। कैसे बोल सकते, क्या कर्म है यहाँ पे? सः रोदिति, that's all. He is crying. So that is bhavavachya, where there is no karma at all. These are the three ways of saying any sentence in Sanskrit. They say how we say active and passive voice, but not exactly the same because there are three, of course. But you can say kartravachya, karmavachya, क्रियावाच्य, भाववाच्य, 3. अस्तु, अवंतिका जी कृपया पठतु। हाँ, अवंतिका जी कृपया पठतु ख दीर्घ ख सार्वधातुके यक। सार्वधातुके यक कर्मवाच्य और भाववाच्य में सार्वधातुक लकारो अर्थात लट, लोट, लंग, विधिलिंग में धातु और प्रत्यय के बीच में यह लग जाता है। धातु का रूप सदा आत्मनेय पद में ही चलता है। धातु चाहे किसी पद की हो, लुट में यह नहीं लगेगा। धातु के साथ
यह लगाकर धातु के रूप सेव धातु के तुल्य होंगे या युद्ध के तुल्य लुट में इष्यते या स्यते आदि गम गम्यते गम्यताम अगम्य गम्ये गमिष्यते आगम्यत गम्येत गमिष्यते. बहु सम्यक्, धन्यवादः. कर्मवाच्य, so there is another new concept that we have not seen so far in Prarambhika or in Madhyamika, whatever this Rachana, main Rachana, I'll call it. Sarvadhatuka lakara. Sarvadhatuka lakara. What are these Sarvadhatuka lakara? There are 4. Lat, Lot, Lang and Vidhiling. These are called Sarvadhatuka lakara. And the other 6, Lang, Lut, Drit, Ring, Ashirling and Lang, Lit. Lang, Lit, Drit, Ring, Lut and Ashirling. These 6 are Ardhadhatuka. What is the difference? Sarvadhatuka mein these things will not change. That is, Sarvadhatuka mainly means they are full. Sarvadhatuka meaning, the literal meaning is Sarvadhatuka is full. Full dhatu lakara is Sarvadhatuka. Ardhadhatuka means it is Sorry. What did you say? Sarvadhatuka is Sarva, full, Full, full. You can say in this sense that Sarvadhatuka, you can call it a full dhatu or full dhatu lakara. While Ardhadhatuka, Ardha means half. The difference is Ardhadhatuka will make some changes. This is the main difference. Ardhadhatuka may make some changes in certain dhatus and in some Sarvadhatuka may make. So for example, here you can just see this. They have said dhatu lat, lot, lang, vidhiling में धातु और प्रत्यय के बीच में य लग जाता है. So gacchati will become gamyate. य गम यते गम यताम agam yata gam yeta. This is lat, lot, lang, vidhiling. But in Rit, gamishyate, जैसे भविष्यति भविष्यते, there is no extra it will not become gamyishyate. It will only be gamishyate because it is ardhadhatuka. Same for late, lung, ring, all these. The rupa will not change. That ya will not get added to other dhatu, other lakaras. Only in these 4 it will get added. This is the difference between Sarvadhatuka and Ardhadhatuka. When we look at sutras, I think among the 4,000 there may be 100 sutras with the word Sarvadhatuka. I think it is possible. What is the question? They are saying धातु का रूप सदा आत्मने पद में ही चलता है. धातु चाहे किसी भी पद का हो. Now my question is that does that mean that suppose some are parasmai, some are atmane and some are ubhaya. So even for the ones which are parasmai padi, they will also be forced into atmane padi. When in karmavachya or bhavavachya. Oh. Karmavachya or bhavavachya mein, not in kartrivachya. Kartrivachya can go in parasmai pada. Saha gramam gacchati, kartrivachya. Gacchati, parasmai pada. That is okay. When you talk about karmavachya and bhavavachya, you will use atmanipada dhatus. Like sa gramam gamyate. Tena gramam damyate. Gamyate atmanipada. Only in karmavachya and bhavavachya this rule will apply. So this year will come into lat, lot, lang and vidhiling. Satyam. No satyam. Okay. So we are Sarvadhatuka. Yes. So year will come in Sarvadhatuka. Yes. But not in Ardhadhatuka. Yes, not in Ardhadhatuka. Sumanjay ji? Yeah. So we can roughly understand this gam yate as you said. Otherwise it would have been gamate and gam. Then a ya comes. Then it becomes gamya. I mean roughly. Exactly. Yes, exactly. That is why gamishyate, not gam yishyate. Because in Rit, there is no ya in the middle of that is after dhatu and pratyaya, between dhatu and gam ishyate. That is all. Not gam ishyate. So all the other lakaras also, if you notice, it will follow the same thing. Lat, lot, lang, vidhiling will have yak. Others won't. And this Sarvadhatuka, Ardhadhatuka, when we come to Laghu Siddhanta Kaumudi, we will see this a lot, where they will divide this many times. Sarvadhatuka and Ardhadhatuka. This
you can just see one small thing, you know. Sarvadhatuka, if I just type into this Ashtadhyayi, you see how many are coming? This is Sarvadhatuka. There will be some that talk about Sarva only. So these are all on Sarvadhatuka. Then there are some on Ardhadhatuka. But it is not only this, because after some of these sutras, they will have some cha. You see, Ado, not this. Some of the sutras after the Sarvadhatuka, Ardhadhatuka, Yoho, there is one sutra, famous sutra. This one. This is talking about which are all Sarvadhatukas and which are all Ardhadhatuka. This sutra, 7384, this is a very central, kind of crucial sutra to Laghu Siddhanta Kaumudi, to future Siddhanta Kaumudi, to even Mahabhashyakara. Sarvadhatuka, Ardhadhatuka, Yoho. This will be one of the first sutras that are important in that sense, because it talks about these are the 10 Dhatu Lakaras in that sense. Many of the sutras will follow the rule of Sarvadhatuka and Ardhadhatuka. Sarvadhatuke Yak, this is 3.167, 3.1.67. So what was 7384 and what is the 31? That is not here. 7384 is not been given in this book. It is a little out of syllabus. This Sarvadhatuke Yak, this is 3167. 3160. So is this also 1 of our 50? No. 1 of our 50 will be 7384. Sarvadhatuka, Ardhadhatuka, Yoho. This, but you know, this is to be known. For example, this won't be an important sutra in the sense we don't need a sutra to know this. Gamyate, that is the form. You don't need a sutra to say, oh, in these 4 lakaras only here will come. That we know through practice. Hence, it is not 1 of our 50 or 100. But it is a very crucial सूत्र नॉनदलेस. ये सब सेव के तुल्य चलेंगे, सेव धातु के तुल्य होंगे. अस्तु. Any other questions before we go to Abhyasa 26? Okay. Prathamah they have given. We said the Ardha Dhatuka will change form. We will see in the example. Yeah, so if that example comes, we will see. Basically, the main point here, as what they have said here, we have to understand first. What they have said here is, in Sarvadhatuka, that form has changed in the sense that is a year added. In some context, Ardhadhatuka will be a little different, but they have not given that here, so we don't need to worry about that. Now what we have to worry about is in Lat, Lot, Lang, Vidiling, which are the 4 Sarvadhatuka lakaras, year comes in the middle. So Gam will become Gamyate instead of Gamate. Pat will become Pathyate. Just say that in Vishnu Sahasranam at the end they chant in the Palashruti ke Parvati Vacha Keno Payena Laguna Vishnur Nama Sahasrakam Pathyatair Panditair Nityam Patyate, she says. That is sort of vague example, but there will be other better known examples even from Upanishad Vakyas where this year has been added to Sarvadhatuka lakaras. ओके अस्तु. अभ्यासः 26. प्रथमः, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है. मया पुस्तकं पठ्यते. मया तृतीया विभक्ति, तृतीया एकवचनं, पुस्तकं प्रथमा एकवचनं, पठ्यते कर्मवाच्य. दिस इज कर्मवाच्य प्रथमपुरुषे एकवचनं ऑफ आत्मनेपद. अस्तु. कितुल जी कृपया वदतु. मया त्वया ये वाला द्वितीय. मया त्वया युष्माभिः अस्माभिः तेन तैः वा गृहं गम्यते. मया गृहं गम्यते, मेरे द्वारा घर में बस वही घर में जाएगा. त्वया गृहं गम्यते, तुम्हारे द्वारा घर में. हाँ, युष्माभिः तुम सब युष्माभिः. तृतीया बहुवचनं ऑफ युष्मद शब्द. हाँ, आप सबके द्वारा, तुम सबके द्वारा घर में बस. और आसमा भी ही हम सबके द्वारा, तुम्हारे द्वारा. तेन उसने, सहता होते तम तो तेन उसके द्वारा ताम तेन. हाँ,
तैः बहुवचन, आप सबके द्वारा, वो सबके, वो सबके द्वारा, तेन ताभ्याम तैः. हाँ, So तृतीया बहुवचन ऑफ, उन सबके द्वारा गण. हाँ, उन सबके द्वारा. So it is not complicated. I mean, the sentence is a little unnecessarily complicated, but in yes. So when we translate, it gets complicated. But in Sanskrit, this Atmanepada is considered to be very beautiful, more beautiful than Parasmaipada, which is a bit kind of direct and dry. So many people say Maya karyam kritam, in that sense they will say Maya pustakam pataniyam, I must read, in that sense they will say, because they say there's a little more beautiful usage of the language. Astu Sumanjay ji कृपया वदतु तृतीय. मया फलम खाद्यते, मेरे द्वारा एक फल खाया जाता है. मया फले खाद्यते, मेरे द्वारा 2 फल खाए जाते हैं. मेरे मया फलानी खाद्यन्ते, मेरे द्वारा 2 से अधिक अनेक फल खाए जाते हैं. सत्य, अनेक फल, 2 से अधिक. So in many places this in Bhashya Tika this word will confuse, not in Khad Dhatu but some other Dhatu like Patyate or Patyate sometimes, and this is the difference. Many times it's very confusing when we read Bhashya Tika, but this when there is only one ekara, that is Khadyate, Patyate, then it is ekavachana. Khadyete will be dvivachana. Kadyate, 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 kadyase, kadyate, kadyatve, in that sense. It will all follow sevate bhava. Astu. Avantika ji कृपया वदतु जनकेन बालः सर्वं. जनकेन बालः दृश्यते. जनक के द्वारा बालकः देखा गया है. जनक के द्वारा बालक को, मतलब बालः प्रथमा एकवचन, सो कर्म, बालक को देखा गया. हाँ, बालक को दृश्यते, लट लकार, देखा जाता है, वैसे देखा गया है. जनक के बालो दृश्यते, 2 बालकों को देखा गया है. बालाः दृश्यन्ते, बहुत सारे बालकों को देखा गया है. देखा जाता है, मतलब लट लकार जाता है. हाँ, जनकेन बालः दृश्यते. So through Janaka, when ये हिंदी और इंग्लिश whenever we translate, it is a little awkward. जनक के द्वारा बाल को देखा जाता है, you can just say जनक बाल देखा है. हाँ. When I was looking at this sentence, because one way for Tritiya is also with Saha, not just Ke Dwara. So I thought here has to come. For that Saha has to come. Janakena Saha, then it is with. Then it will fit. So we can't just say, okay, so Tritiya we cannot say is with. No. Janakena Saha. Exactly. Saha has to come, then you say along with Tritiya. So Janakena Saha Balaha Drishyate, then it will not make much sense. जनक के साथ. हाँ, जनक के साथ वैसे होगा. हाँ, सत्यम. But दृश्यते का मतलब आत्मनेपद यूज करने का, पद प्रयोग का आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस यूज पारस्मैपद. बालः पश्यति जनकेन सह. We are speaking beautiful Sanskrit, so we will say drishyate. हाँ, दृश्यते, but it has to make sense, and here it makes sense. अस्तु. सुंदर जी भवानी वदतु पंचमी. Okay, so tena atra bhuyate. So therefore it will be uske dwara tena. So uske dwara yahan bhuyate to be. So bhava is like to be. Bhuyate means raho. नहीं, वो लोट हो जाएगा ना. भूयते इज ओनली लट लकार. तो रहता है. हाँ. कस्मिन् वाच्य अस्ति अत्र? कस्मिन् वाच्य कस्मिन् अस्ति? Okay, so तेन अत्र. Okay, so this is one is Tritiya, so therefore it is either karma or bhava. And then there is no, this is a bhavachya because there is no. Correct. Satyam. बहु समीचीनं. कर्म नास्ति अत्र. कर्म नास्ति अत्र वाच्ये वाक्ये. अतः ततः
भाववाच्य. What I was just thinking, whenever Swamiji will speak, he will say why, and then he will say, that karma nastitvat. So, yes. In Brahma Sutra, for example, everywhere they give this, right? Panchami Ekavachana will be used by. Give it as that hetu. That is what it is. Why? Satyam. Astu. Nice. Ketulji Shashta. Pragya. पुस्तकस्य कर्त्रा लेखो लिख्यते, श्रोत्रा हस्यते, गंत्रा ग्रामो गम्यते. हाँ, बस इतना बस ये नहीं बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है. तो पुस्तक के कर्ता, हाँ. पुस्तक के कर्ता के द्वारा लेख लिखा जा रहा है. हाँ. श्रोता, श्रोता के द्वारा हंसा जा रहा है. सत्य. और गंत्रा ग्राम, जाने वाले हाँ. गांव को जा रहे हैं. हाँ, सत्य. जाने वाले के गांव द्वारा को, हाँ, गांव को जा रहे हैं. हाँ, गांव जा रहे हैं और गांव जाता है, जा रहा है. सत्य. लट लगा. So in that sense, everything else, adhetra pataha, naptra bhojanam, adhetra pataha, patyante, naptra bhojanam pachyate, naptra was branch, the bhojanam pachyate, cooker, food has been cooked, savitra bhasyate, this is bhavavachya, naptra bhojanam, adhetra bhi pataha, ये सब कर्मवाच्य है, क्योंकि तृतीया में है पहले और कर्म भी है. श्रोत्रा हस्यते is also bhavavachya. हाँ, श्रोत्रा हस्यते is also bhavavachya. There is no karma. Satya. They are all akarmaka dhatus. This bhas, has, these are all akarmaka dhatus, so they will automatically fall in bhava. Yeah, they don't need any karma. They itself One small thought. This lekho likhyate. Would that be hashicha? Correct, exactly. Wonderful. Yeah, perfect. Yes, kartra lekho likhyate. And the funny thing is, they should have given Janakena balo drishyate in Panchama. They didn't. They could have given. Actually, they should have, because hashicha we have already seen. So they can do this sandhikare for all. Kartra lekho likhyate is hashicha. Exactly. And in the same way, Savitra Bhaya, Drashtrabhihi Chatra Drishyante. Drashtrabhihi. Seer is looking at students. देख रहा है, देखा जाता है. In Drashtrabhihi is also bahuvachana, right? Yes, Tritiya bahuvachana. Seers, Satyam. Seers. Tvashtra Chatra Vidhatra cha namyate. So it's Dhatra. Dhatra Vidhatra. These shabdas often will come in the sense of Ishvara, Paramatma, etc. This Vidhata, Vidhata and all these shabdas. Those will come often in mantras and our bhashya. This naptra bhojanam and all, I don't think we will ever see. Maybe in Mimamsa that avodhanam pachati, etc. But we may not see bhojanam pachyate, naptra will come and do cooking. But this dhata vidhata we may see in this sense. As the stotribhihi, nyatribhisya, dveshtacha, bhoktribhihi, everything is quite simple. Sorry, just tell me what is the meaning of badai? Carpenter. Carpenter. Badai. Srishtra, right? Srishtra. Badai. Very formal Hindi. Badai. Carpenter. Twashtra. Astu. Saptama. Avantika ji ke bhai to balakah uchchaihi. बालकः उच्चैः रोदिति अरोदितो रुद्यात् रोदिष्यित्वा. बालकः उच्चैः रोदिति. बालक जोर से रो रहा है. अरोदित रो रहा था. रोदितु रो जाओ. रोवे you can say क्या? रो. अच्छा आज्ञा है. हाँ. रुद्यात. फिर रुद्यात. क्या अजीब सा लग रहा है ट्रांसलेशन. बहुत अजीब सा. रोज मतलब किसी को बोलने रो जाओ ऐसे नहीं बोल. बालक उच्चे रोदिति रो रहा है. बालक उच्चे ही रुद्यात. रोना चाहिए. बालक ही रोना चाहिए. रोना चाहिए.
चाहिए? हाँ, क्योंकि विधिलिंग है ना। अच्छा। हाँ, रुद्यात् और रोदिष्यति रोदिष्यति रोने वाला है, रोएगा वैसे। रोएगा, सॉरी। तो उच्च ही रोदितु रुद्यात वगैरह अजीब सा ही है, मतलब क्या मतलब, बट फॉर द सेक ऑफ ट्रांसलेशन, क्योंकि आज के एक ही धातु है, देयर इज ओनली रुद्ध धातु टुडे इन अभ्यास 26, सो दे हैव टू यूज रुद्ध धातु ओनली एवरीवेयर। सेम दे विल यूज अगेन इन 8th। सुंदर जी कृपया तो अष्टम बालक। I was struggling a little bit with the word in this roditu. हाँ, Because the minute you क्योंकि ये lot, नोट see roditu is part of lot. मध्यम पुरुष में आना चाहिए ना, That is a bit difficult to. क्योंकि पहला वाला जो सेंटेंस है रोदिति हाँ। प्रथम पुरुष है, एक वचन। फिर ये मध्यम रोदितु जो है मध्यम पुरुष एक वचन आना चाहिए। क्यों बालक को नहीं बोल रहे हैं ना हम, वो बालक मतलब रो, वैसे लोट लकार हिंदी में या इंग्लिश में ऑल्सो इट डजंट मेक सेंस, लेकिन संस्कृत में हम बोल रहे हैं लोट लकार में। और साहा ही शुड, वैसे ही शुड क्राई, उसको बहुत मतलब रोना चाहिए, लेकिन बहुत डायरेक्टली रो वैसे। या हम बोलेंगे विधिलिंग में रोना चाहिए, क्या था वो, क्या बोलेंगे, रोगे। If somebody dies or something, people, you should cry. It's good to give up your grief. Like that. हाँ, that is विधिलिंग। बट Yeah. लोट लकारे मध्यम पुरुष क्यों नहीं होना, क्यों होना है? मध्यम पुरुष होगा अगर हम बोल रहे हैं तू रो, वैसे you cry now. We are not saying that. We are saying he should cry. He must cry. वैसे हिंदी में should और must में there are no different words. रोना ही चाहिए, ऐसे रोज। Anyway, लोट और विधिलिंग ये धातु में अर्थ ज़्यादा नहीं है, अर्थांतर ज़्यादा नहीं है। Okay. 8. Should I try the 8? But Avantika ji, your question is okay, this answer? यस। हाँ, ये थोड़ा अजीब सा ही रहेगा ये धातु। हाँ, सुंदर जी अष्टम। So balakena. So therefore again tritiya. So through the balak, हाँ, balak के द्वारा उच्चैः रुद्यते. So loudly the person is rudyate. So rudyate is ये सेम है पारस में पता, आत्म नहीं पता। समान। okay, yeah, correct, like Sevate. Yeah. So जोर से रोता है, correct. And arudyat, हाँ, रोया था. हाँ, Rudyatam, Rudyatam is the two is two people, विद्यताम two people. विद्यताम बुद्धिम। हाँ, Yeah. And Rudyat is the विद्येत, Rudyat Vidulu हाँ, कुरियात वैसे विद्येत, and Rodishyate will cry. लेट लगा। So I have a question, सुंदर जी। Why it is not rudate? Because here it is roditi only. Roditi, but that year has come in because of that. It is Sarvadharmak हाँ, धातु Dhatu. सार्वधातु के सार्वधातु के यक इति सूत्रेण रुद्यते भवति, रुद्यते अरुद्यत सर्वे भवति, सार्वधातुके यक इति अनेन सूत्रेण, इफ यू वांट टू से इन प्योर संस्कृत, थ्रू दिस सूत्र, अनेन सूत्रेण, ये सूत्र के द्वारा, इति अनेन सूत्रेण, थ्रू दिस सूत्र रुद्यते शब्द भविष्यति। द्वितीय संस्कृत बनाओ। सुमंजय जी कृपया वदतु प्रथमः, तेरे द्वारा मेरे द्वारा हंसा जाता है। तेरे द्वारा, त्वया, हाँ, सत्य, मया, तैः च हस्यते। हस्यते, बहु सम्यक् अस्ति, हस्यते, हंसा जाता है, एकवचन। अस्तु, भवानी Why would we not say Tena, why Taihi? Because Tvaya, Maya, उनके Unke. द्वारा। So therefore Taihi. Yeah, that's correct. Sumanjay ji, well caught. वंडरफुल। I would have missed that. Thank you. सुमंजय जी भवानी कृपया वदतु द्वितीय कति पुस्तक कर्ता।
पुस्तक के कर्ता द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। पुस्तकस्य कर्ता ग्रंथः पठ्यते। सत्य ग्रंथः ग्रंथ शब्द इज नपुंसकलिंग I guess. Grantham, you want to see? Grantha, you have to see. Which linga is grantha? Grantha is napumsakalinga. No, pullinga. Correct. So it is grantaha. Grantaha. Prathama ekavachana. Satya. I guess you said grantaha. So Manjayji, you are correct. Grantaha. Grantaha patyate. Bahu samvedasti. अस्तु केतुल जी कृपया जो तृतीय धन के कर्ता द्वारा धन ले जाया जाता है। तो धनस्य कर्ता धनम नीयते। धनस्य कर्ता धनम नीयते। धनम नीयते। बहु सम्यक्। चत्वार पंचम षष्ठ they are all very similar. Bhara they had given bhara only, right? Sanskrit shabd is bhara only, but they had given bhoj as bhara. Ram bharasya धर्त्रा भारः आनीयते। बहु सम्यक्। इज ब्रिंगिंग हियर आनीयते। यहाँ लाया जाता है। अत्र अत्र आनीयते। अत्र इह अत्र आनीयते। पंचम षष्ठ वी डोंट हैव टू डू। आई जस्ट क्विकली से श्रोताओं के द्वारा। सो श्रोतृभिः बहुवचनम हंसा जाता है। तो हस्यते क्योंकि श्रोताओं के द्वारा हंसा जाता है एकवचनीय तो हस्यते। अगर है तो फिर हस्यते अथवा हस्यन्ते अपि सम्यक् अस्ति, परन्तु अत्र हस्यते। वक्ता के द्वारा भाषण दिया जाता है। दिस विल बी वक्त्रा भाष्यते। सो सिंपल ओनली, इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। बोथ आर भाववाच्य। अर्लियर वर कर्मवाच्य क्योंकि कर्म है। ये दोनों भाववाच्य वाक्य स्थान। अस्तु अवंतिका जी कृपया हेतु सप्तम नाती के द्वारा। नाती के द्वारा गुरु की सेवा की जावे। नप्त्र नप्त्रा नत्रा द्वारा। नप्त्रा तृतीया एकवचन। नप्त्रा जैसे कर्त्रा ऐसे। नप्त्रा नप्ता के द्वारा एक नप्त्रा। अग्रे गुरु की सेवा की जावे। दिस इज नॉट लेफ्ट। ये थोड़ा डिफिकल्ट है। सेव्यते की जावे। गुरु सेवया की जावे। ये विधिलिंग होगा ना, करना चाहिए वैसे। विधिलिंग की जावे जैसे रोवे। विधिलिंग करना चाहिए और लोट तो लोट लकारे सत्य की जावे। नप्त्रा गुरुः सेवया। सेवया नहीं आएगा। नप्त्रा गुरुः सेव्यताम। इट विल बी सेव्यताम। किंतु because or you can if you are saying विधिलिंग then सेव्येत। जैसे क्या है रुद्येत जैसे सेव्येत। गुरुः सेव्येत। और
in like Rudyatam, Sevetam. What is the question? No, will it be Sevyatam or is it Sevetam? Sevyatam. Like Rudyatam. We need that ya again, and because it's also the Lot. that dhatu. Exactly. Because it is lot lakara, ya will come. Sarvadhatu ke yak. Because in Seveta dhatus, the ya was not there. Yes, it won't be. But that in Sevate, even though in Sevate it is not there, because here they have given in this context, right? Karma vachya और भाव वाच्य में. That was in कर्तृ वाच्य. Here कर्म वाच्य और भाव वाच्य में yak लगेगा. So because we are doing in karma vachya here, we will say sevyate instead, even though sevate was given earlier, because it is karma vachya. Certain sentences are like used in both, right? Lot and Vidili. And either is fine. Either we can, Yes. So here also sevyate is okay. Vidiling, Avantika ji said Vidiling, that that is is also also fine. सत्यम. अवंतिका जी भवती कृपया तो अष्टम. सूर्य के द्वारा तपा जाए. सूर्यया सत्यम. सूर्यया और सूर्येण होगा ना. तृतीय सूर्येण. रामेण सूर्येण. सूर्येण क्या तपा जाए. तप मतलब भास बोल सकते हैं ना यहाँ पे. सूर्येण भास्यते, यू कैन से. तप्यते. तप्यते. यहाँ पे तपा जाए तो विधिलिंग. अच्छा, ये दोनों शब्द साथ में लेने हैं. तपा और जाए ये अलग अलग शब्द नहीं है. नहीं, हिंदी में एक है. तो तप जाए तो तप एक ही धातु है ना. तपा जाए, फिर तपा जाए हिंदी में दिए हैं, लेकिन तपा जाए तो तप धातु विधिलिंग लकार होगा. तपा जाए और लोट लकार वट. तप्येत अथवा तप्येताम, जैसे रुद्यताम. See, when you come to a word like Surya, you just have to know whether it's masculine or feminine. Like Avantika ji started with Suryaya, which is like feminine. Yes. And then we said Suryena. Yes, you have to know. Linga. That we just No, have to. I was confusing Vibhakti. But it's see, they are. I was trying to get its Dwara means it is Panchami. It's the Tritiya, but I don't remember the Tritiya. So Ramaya. Sorry, it's like that. It's okay, but here they have given Savitra Shabda. See, they had given Savitra Surya यहाँ पे. तो सवित्रा बस like जैसे कर्त्रा, दर्त्रा, हर्त्रा, सवित्रा. In that way also. Savitra is like a कर्तृ शब्द. Exactly. कर्तृ जैसे exactly as कर्तृ. So कर्त्रा, हर्त्रा, whatever, सवित्रा. अस्तु. So it means कर्तृना, sorry, savitruna, otherwise savitra. सवित्रा बस सवित्रा. सवित्रा तप्येत. सूर्य के द्वारा तपा जाए. सवित्रा तप्येत. That is enough. अस्तु. सुमंजय जी नवम. अध्येता के द्वारा 3 ग्रंथ पढ़े जाए. अध्येत्री त्रीणि तिस्रः ग्रन्थाः पढ़े जाए. पठ्यन्ताम इन लोट लकार. पठ्यन्ताम पठ्यन्ताम सत्यम. और अथवा इन विधिलिंग इट विल बी पठ्येरन. विधिलिंग प्रथम पुरुष बहुवचन पठ्येरन. बट माय क्वेश्चन इज त्रीणी इज फॉर
नपुंसकलिंग. तीसरा है इज फॉर स्त्रीलिंग and trayah will be for pullinga. So here grantah trayah putra grantah. Trayah grantah pattiran or patyantam. Patyantam patyantam. हाँ patyantam you can say लोट लकार और पट्टीटा. Correct. So दाशमा गाँवों को जाने वाले अहम वदामी गाँवों को. So ग्रामान इन गाँवों को तो ग्रामान गंत्र ग्रामान गंत्र बिही जाने वालों के बहुवचन. ग्रामान जाने वालों के द्वारा गंत्र बिही गाँवों को जाया जावे. गाँवों को जाया जावे. सो ग्रामाः बिकॉज ऑफ प्रथमा एक बहुवचन ग्रामाः एंड देन गम धातु विल कम. सो गम येरन if you want to say within. So these words we will not have so much prayoga in our Bhashyatika, so we have to quickly see about these factors. एकादश दर्शक के द्वारा. So क्या शब्द है दर्शक? दृष्ट, राइट? दृष्ट्रा, दृष्ट्रा छात्रः छात्रौ, छात्रौ द्वौ छात्रौ और छात्रौ देखे जाएं तो पश्येताम दृश्येताम. दृश्येताम नॉट पश्, दृश्येताम. सो दीस शब्दस आर अ लिटिल हार्ड. दृश्येताम है, दृश्येताम नॉट पश्य. अस्तु. नगर में द्वादश अहम वदामि. नगर में बड़े ही नेता सर्वे. नगरे ऑल ऑफ देम आर, सभी लोग रहते हैं. सर्व वसंती you can say वसंती because it is only रहते हैं. this is कर्तृवाच्य. there is no karma bhava and all. it can just be in parasmapada. नगरे सर्वे वसंती. Because it's कर्तृवाच्य. otherwise it will be vasante. Vasante will only be if it is atmanepada, but since it is कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य we use it. घ अस्तु. this we can do. so केतु जी के प्यार तो बालक रोता है. बालिका रोती है. अच्छा वहाँ पे बालिका रोती है. हाँ ठीक है. बालिका रोती है. बालिका रोती है. बालिका हाँ रोदिति. रोदिति सत्यम. अवंतिका जी के प्यार तो तू रोता है. त्वम रोदसी. सत्यम. सुंदर जी कृपया तो मैं रोता हूँ. अहम रोदामि. हाँ. और सुमंजय जी वह रोवे. Understand? This I have to translate. वहाँ रोए. हाँ वह रोए. Okay. In Sanskrit. Okay, so this will be सः रुध्यताम. No. Rove will be Rodatam was there, but then that would whatever, whichever. Lot and Vidling will both go in this context. They should. We are talking about so Ya will come here because it's Sarvadhatuka, right? Yes, it is Sarvadhatuka, but we are only using it in Parasmapada. If we want to use in Atmanepada, then that Ya will come. But we are not saying it in Karmavachya. We are just saying Saha, right? Saha Roditu also is correct in this context. Saha Roditu is enough. So, Saha Rodati, मतलब बालिका बालक रोदिति, त्वम रोदिषि, अहम रोदामि. No, अहम रोदामि. रोदिमि. मैं रोता हूँ. 15. In blood it is रोदिमि. हाँ 15. मैं रोता हूँ. अहम रोदामि. परस्मैपद. And वह रोहि सह रोदितु. Sorry. I am looking at this page 163. 163. हाँ. Okay. So परस्मैपद लट, right? लट परस्मैपद. लट परस्मैपद उत्तम पुरुष एक वचन. रोदिमी. सत्यम. हाँ. रोदिमी. Correct. So it will be Rodimi, not Rodami. That is correct. Yes, thank you, Sundarji. Correct. Rodimi.
not rodami. Aham rodimi panchadasha. And saha rove, sa roditu. This is all in Parasmapada. The next four are all in Atmanepada. Fine, we will do it just for the sake of completion. Not this tu ro we don't need. Me na ro u. This will be Atmanepada, right? So Ketulji Bhavan Valtu. मैं न हूँ अहम न अहम लोट में होगा ना रो. अहम न रोद्या This is not Parasmay, Atmane. This is also Parasmay only. अहम न रोदानी Aham na rodani. Is there any Atmanepada here? No, everything is Parasmapada. Then there is no need to do it. I hope everyone is clear. Where roya lang lakara, tu roya lang lakara, roya rang lakara, roega lit lakara, roega roinga sarve lit lakare. So all 5 lakaras they again. Rota hai lat lakara. Rota hu. Rove ro vidiling or lot. Mena ro lot. Var roya tu roya मैं नहीं रोया लंग. वह रोएगा तू भी रोएगा मैं नहीं रोऊंगा lit. So those 5 main lakaras have been given by them. अस्तु आशुद्ध टु शुद्ध वाक्य. अहं पठामि. त्वया मया तैः हसन्ते नास्ति. त्वया मया तैः हस्यते एकवचन. पुस्तकस्य कर्ता ग्रन्थं लिख्यन्ते. पुस्तकस्य ग्रन्था ग्रन्थः. So Sumanjay ji had correctly said grantha. It is pullinga. Graman gantra gramam gacheyuhu. Graman gantrabihi because bahuvachana is required and gacheyun nasi gammiran they have changed it. Roditi rodami rodate roda. So this is the mistake that Sundarji pointed out. Roditi rodimi not rodami. Rodimi and rudyat and rudihi. Actually, rodami is more intuitive and natural. Yes, but some dhatus will be that way, you know. They will have those small differences. But here, yes, rodimi. Good catch. Lat, lot, lung, vidhiling. All of us have done all this. Lot, lung in this whole abhyasa. I think all of us did at least one of each lakara from Sanskrit and Hindi. So no need to do do, ka, ko, lot, lung, vidhiling और rit में बदलो. दूसरी चीज़ है ये अभ्यास में रुद्र धातु ही जाएगा पूरा. हर every sentence is rudra dhatu mostly, except they have given has dhatu, bhash dhatu, etc. It is not so much of a challenge. You just have to see that page and say lot, lat, lot, lang, lit. So like rudra dhatu we have done all of that. Kha ko lot, lang or lat में बदलो, that we just did. Gha को बहुवचन बनाओ, we have done ekavachana and bahuvachana. रुद्र धातु के 10 लकार के रूप बताओ. So this we have to see. We saw yesterday. We have, when you have time, go through it. इन शब्दों के पूरे रूप लिखो. कर्तृ. So पूरे रूप लिखना है. Whatever you just see कर्त्रा कर्तारव कर्तारहा in that sense. All of them how they work in all 8 vibhaktis. Ch. So you see that the instead of A B C D E they have used ka ka ga ga nga and then they will come to ch 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 j. तुदादिगण की विशेषता बताओ. हाँ, तुदादिगण की विशेषता क्या है? किम अस्ति? हाँ, तुदादिभ्यः शाः. सत्य. तुदादिभ्यः शाः. विकरण प्रत्यय अ अस्ति, परंतु in the beginning itself we had seen भ्वादिगणे विकरण प्रत्यय गुण भवति. तुदादिगणे गुण न भवति. सत्य. गुण नास्ति. Okay, any questions? I am going little fast in this abhyasa, but if I should slow down, let me know. I am going little fast because we have done all this. All of us did lat, lot, lang, vidhiling, lit, everything now. So you just did that definition of Tivadi, where is that on the page? Niyam 109, 52. पृष्ठ क्रमांक वा पंचाशत. That is how the shloka or whatever that is defined for Tivadi. सूत्र तुदादिभ्यः शः. Shaha. This is 3177. I don't know if I gave the number. 3.1.77. Tudadibhyaha Shaha. जैसे we had Kartari Shap for the first one. Kartari Shap for Bhadigana. And then we had this yesterday, I guess we had Swadibhyaha Shnuhu.
then Divadibhyaha Shyam. In that sense, each of the ganas have a Vidhayaka Sutra. This is Sutra for Tudadi. Tudadibhyaha Shyam. छ दीर्घ छ कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्तृवाच्य के से क्या अंतर होता है 10 उदाहरण देकर समझाओ 10 उदाहरण एक एक उदाहरण देंगे हम ठीक है केतु जी कर्मवाच्य भाववाच्य कर्तृवाच्य किम भवति अंतर कर्मवाच्य भाववाच्य और कर्तृवाच्य सो कर्मवाच्य में क्रिया है वो कर्म के अनुसार चलती है उदाहरण हाँ उदाहरण also so any dhatu you can just use or sentence हाँ okay we can check this way kartruvachya sentence we can use I can give Ramah gramam gacchati कर्मवाच्य कैसे भवति yes कथं भवति गच्छति हाँ हाँ रामेण ग्रामः हाँ ग्रामम नपुंसकलिंग गम गम्यते सत्यम और भाववाची अगर है तो रामेण गम्यते ऑफ कोर्स इट हैज टू बी अ अकर्मक धातु रामेण हास्यते और व्हाटएवर समथिंग लाइक दैट अस्तु सुंदर जी कृपया वदतु सः पुस्तकं पठति इफ दिस इज द कर्तृवाच्य सः पुस्तकं पठति कर्मवाच्य किं भवति तेन हाँ पुस्तकं हाँ पठ्यते बहु सम्यक् अस्ति सुमञ्जय जी कृपया वदतु अहं फलं खादामि इन कर्मवाच्य मया हाँ फलं हाँ खाद धातु खाद्ये सत्यम खाद्ये मया फलं खाद्ये सत्यम भाववाच्य कर्म विल नॉट बी देयर सम अदर धातु वी कैन यूज अवंतिका जी कृपया वदतु सा गृहं गच्छति और नॉट गृहं सा गृहं नॉट गृहं एक निमिषः सा पाठम पठति इफ यू वांट टू से इन कर्मवाच्य कैसे होगा सा हाँ पाठम पठ्यते हाँ ते सा विल बी तृतीया एकवचन तृतीया सा अच्छा वी हैव नॉट सीन दैट सॉरी सा ते ता ताम ते ता हा ताया विल बी तेन हाँ तेन सहा तया सा है ना तया आएगा तया सत्य तया हाँ पाठं पठ्यते बहु सम्यक् सत्यमस्ति बहु समीचीनमस्ति इन धातुओं घ अभी ज सॉरी ह्रस्व ज इन धातुओं के कर्मवाची में 10 लकारों में रूप बनाओ ठीक है देखेंगे हम जब टाइम मिलेगा देख लीजिए पड सेव नम गम नी भाष अस्तु एक वाक्य वी विल जस्ट डू एंड स्टॉप केतुल जी कृपया वदतु पाठ्यते इति अनेन शब्देन सह एकवाक्यम् मया संस्कृतस्य मया संस्कृतं पठ्यते सत्यं सुंदर जी गम्यते बहु सम्यक् सुमंजय जी भाष्यते अर्जुनेन प्रज्ञावादाः प्रज्ञावादः भाष्यते हाँ बहु सम्यक् अस्ति अस्तु अवंतिका जी नमस्यते डिफिकल्ट ओके मया हाँ ईश्वरं नमस्यन्ते नमस्यते विल बी प्रथम पुरुष सो सहा ओनली सेम फॉर सुंदर जी एक्चुअली हाँ सः ईश्वरं हाँ नमस्यन्ते नमस्यते सत्यं सा ईश्वरं नमस्यते सा ईश्वरं नमस्यते उभयोः सम्यक् सन्ति स्तः सुंदर जी आल्सो गम्यते अहम विल नॉट कम आई डोंट नो इफ यू सेड अहम I said Ramam. रामम हाँ सत्यं ओके रामेण इज करेक्ट
Astu. So everybody was correct. Astu. With this, Abhyasa 26 is also finished. From now on, we will go a little faster because there won't be many new things to see. Pratyaya will start soon. So now we have just got to finish up all these loose ends in terms of Gana, and from Abhyasa 29 in 1 week or so, Pratyayas will begin. Then it will get more interesting. Astu. Any question before we start? प्रश्नस्य कोऽपि नास्ति चेत् अस्तु. Sandhi Prakarana is over. Okay, we have finished all sandhis in this book except 10 sandhi बाद में है, मतलब पीछे, they are in the end. We will see them when we have time later on sometime. So sandhi, as far as abhyasas are concerned, sandhi is over. Gana will also be over very soon. Then pratyaya will come. So these three main things, we are going to finish 2 of them in Rasvan Valakam. समीचीनमस्ति. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः. शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तिदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः. ओम